Question. Discuss the issue of communal conflict in Tamils with reference to communal tension in India's history after the partition. Answer. Tamils, written by Visham Sahni, is a powerful and evocative novel that explores the themes of communal conflict and tension in the aftermath of the partition of India in 1947. The narrative is set in a fictional town and provides a stark portrayal of the human tragedy resulting from religious and communal animosity. The events depicted in Tamils resonate with historical incidents of communal tension in India's post-partition history. Here are key points discussing the issue of communal conflict in Tamil. Question. Discuss the issue of communal conflict. Question. Discuss the issue of Question. Discuss the issue of communal conflict in Tamils with reference to incidents of communal tension in India's history after the partition. Answer. Tamils, written by Visham Sahni, is a powerful and evocative novel that explores the themes of communal conflict and tension in the aftermath of the partition of India in 1947. The narrative is set in a fictional town and provides a stark portrayal of the human tragedy resulting from religious and communal animosity. The events depicted in Tamils resonate with historical incidents of communal tension in India's post-partition history. Here are key points discussing the issue of communal conflict in Tamils with references to incidents in India's history. 8. Partition and communal discord. Tamils unfolds against the backdrop of the partition of India in 1947, a period marked by communal violence, mass migrations, and the division of the subcontinent into India and Pakistan. Historical context. The novel reflects the historical reality of widespread communal discord during the partition, leading to immense human suffering and loss. Though religious divide. The novel delves into the deep-rooted religious divide between Hindus and Muslims, portraying how communities that had coexisted for generations become polarized during times of political turmoil. Historical reference. The communal tensions in Tamils align with the larger religious divide that fueled the violence and bloodshed during the partition. Theme. Role of political leaders. Tamils explores the role of political leaders in inciting communal violence for their own gains. The manipulation of religious sentiments by political figures adds a layer of complexity to the communal conflict. Historical reference. The novel resonates with historical instances where political leaders exploited religious differences to further their political agendas, contributing to communal tensions. 4. Mass migration and displacement. The novel depicts the mass migration and displacement of people as a consequence of communal violence. Families are torn apart, and individuals are forced to leave their homes in search of safety. Historical context. The forced migration and displacement depicted in Tamils align with the historical reality of millions of people being uprooted and becoming refugees during the partition. 5. Brutality and violence.
Tamaz vividly portrays the brutality and violence that accompany communal conflicts. The novel does not shy away from depicting gruesome incidents, emphasizing the dehumanizing effects of religious animosity. Historical reference: the brutal incidents in the novel find parallels in historical accounts of communal violence during and after the partition, where atrocities were committed on both sides of the religious divide. Chair. Impact on civilian lives. The novel emphasizes the impact of communal conflict on ordinary civilians. Families are torn apart, relationships are shattered, and the lives of individuals are irrevocably changed. Historical context: the depiction of civilian suffering in Tamaz aligns with historical accounts of the human cost of communal violence, where innocent lives were lost and communities were torn apart. Sat. Law and order breakdown. Tamaz portrays the breakdown of law and order in the face of communal tensions. The institutions that are supposed to protect citizens often fail, leading to a state of anarchy and chaos. Historical reference: the breakdown of law and order depicted in the novel reflects historical instances where the authorities struggled to maintain control during communal riots. Art. Fear and distrust. The novel captures the pervasive atmosphere of fear and distrust that engulfs the town as communal tensions escalate. Neighbors turn against each other, and the sense of community disintegrates. Historical context: the fear and distrust depicted in Tamaz resonate with historical accounts of communities becoming divided along religious lines, eroding trust and social cohesion. No. Role of rumors and propaganda. Tamaz explores the role of rumors and propaganda in fueling communal tensions. Misinformation spreads rapidly, contributing to the escalation of violence. Historical reference: the use of rumors and propaganda to manipulate public sentiment is a historical reality during periods of communal tension, as seen in various incidents in India's history. Thus, long-term consequences. The novel suggests that communal conflicts have long-term consequences, leaving scars on the social fabric that persist for generations. The wounds inflicted during times of religious strife are not easily healed. Historical context: the long-term consequences depicted in Tamaz align with the historical reality that communal conflicts often leave a lasting impact on the affected communities, shaping their collective memory and identity. In summary, Tamaz serves as a poignant exploration of communal conflict in the aftermath of the partition, drawing parallels with historical incidents of communal tension in India. The novel captures the complexities of religious animosity, the human tragedy resulting from violence, and the lasting impact of communal conflicts on the social and cultural landscape. By intertwining fiction with historical realities, Tamaz provides a nuanced understanding of the intricate web of factors that contribute to communal discord in post-partition India. प्रश्न: विभाजन के बाद भारत के इतिहास में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के संदर्भ में तमस में सांप्रदायिक संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा करें। उत्तर: भीष्म साहनी द्वारा लिखित तमस एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक उपन्यास है जो 1947 में भारत के विभाजन के बाद सांप्रदायिक संघर्ष और तनाव के विषयों की पड़ताल करता है। कथा
एक काल्पनिक शहर पर आधारित है और एक स्पष्ट चित्रण प्रदान करती है धार्मिक और सांप्रदायिक शत्रुता से उत्पन्न मानवीय त्रासदी। तमस में चित्रित घटनाएं भारत के विभाजन के बाद के इतिहास में सांप्रदायिक तनाव की ऐतिहासिक घटनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। यहाँ घटनाओं के संदर्भ में तमस में सांप्रदायिक संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। भारत का इतिहास। 1. विभाजन और सांप्रदायिक कलह। तमस 1947 में भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो सांप्रदायिक हिंसा, बड़े पैमाने पर पलायन और उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में विभाजन से चिन्हित था। ऐतिहासिक संदर्भ। उपन्यास विभाजन के दौरान व्यापक सांप्रदायिक कलह की ऐतिहासिक वास्तविकता दर्शाता है, जिसके कारण भारी मानवीय पीड़ा और हानि हुई। 2. धार्मिक विभाजन। यह उपन्यास हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी जड़ें जमा चुके धार्मिक विभाजन पर प्रकाश डालता है, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे पीढ़ियों से सह अस्तित्व में रहने वाले समुदाय राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान ध्रुवीकृत हो जाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। तमस में सांप्रदायिक तनाव बड़े धार्मिक विभाजन के साथ संरेखित है, जिसने विभाजन के दौरान हिंसा और रक्तपात को बढ़ावा दिया। 3. राजनीतिक नेताओं की भूमिका। तमस अपने लाभ के लिए सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में राजनीतिक नेताओं की भूमिका की पड़ताल करता है। राजनीतिक हस्तियों द्वारा धार्मिक भावनाओं का हेरफेर सांप्रदायिक संघर्ष में जटिलता की एक परत जोड़ता है। ऐतिहासिक संदर्भ। उपन्यास उन ऐतिहासिक उदाहरणों से मेल खाता है जहां राजनीतिक नेताओं ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाया और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। 4. बड़े पैमाने पर प्रवासन और विस्थापन। उपन्यास में सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन और विस्थापन को दर्शाया गया है। परिवार टूट गए हैं और लोगों को सुरक्षा की तलाश में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐतिहासिक संदर्भ। तमस में दर्शाया गया जबरन प्रवास और विस्थापन विभाजन के दौरान लाखों लोगों के उजड़ने और शरणार्थी बनने की ऐतिहासिक वास्तविकता से मेल खाता है। 5. क्रूरता और हिंसा। तमस सांप्रदायिक संघर्षों के साथ होने वाली क्रूरता और हिंसा का स्पष्ट चित्रण करता है। उपन्यास धार्मिक शत्रुता के अमानवीय प्रभावों पर जोर देते हुए भीषण घटनाओं का चित्रण करने से नहीं कतराता। ऐतिहासिक संदर्भ। उपन्यास में क्रूर घटनाओं को विभाजन के दौरान और उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा के ऐतिहासिक विवरणों में समानताएं मिलती हैं, जहां धार्मिक विभाजन के दोनों पक्षों पर अत्याचार किए गए थे। 6. नागरिक जीवन पर प्रभाव। उपन्यास आम नागरिकों पर सांप्रदायिक संघर्ष के प्रभाव पर जोर देता है। परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और व्यक्तियों का जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ। तमस में नागरिक पीड़ा का चित्रण सांप्रदायिक हिंसा की मानवीय लागत के ऐतिहासिक विवरणों से मेल खाता है, जहां निर्दोष लोगों की जान चली गई और समुदायों को तोड़ दिया गया। 7. कानून एवं व्यवस्था भंग। तमस सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में कानून और व्यवस्था के टूटने का चित्रण करता है। जिन संस्थाओं पर नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वे अक्सर विफल हो जाती हैं, जिससे अराजकता और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है।
ऐतिहासिक संदर्भ उपन्यास में चित्रित कानून और व्यवस्था का टूटना ऐतिहासिक उदाहरणों को दर्शाता है जहां अधिकारियों को सांप्रदायिक दंगों के दौरान नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 8. भय और अविश्वास। उपन्यास भय और अविश्वास के व्यापक माहौल को दर्शाता है जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण शहर में व्याप्त हो जाता है। पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और समुदाय की भावना खत्म हो जाती है। ऐतिहासिक संदर्भ तमस में दर्शाया गया भय और अविश्वास समुदायों के धार्मिक आधार पर विभाजित होने, विश्वास और सामाजिक एकता के नष्ट होने के ऐतिहासिक वृत्तांतों से मेल खाता है। 9. अफवाहों और प्रचार की भूमिका। तमस सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने में अफवाहों और प्रचार की भूमिका की पड़ताल करता है। गलत सूचना तेजी से फैलती है जिससे हिंसा में वृद्धि होती है। ऐतिहासिक संदर्भ सांप्रदायिक तनाव के दौरान सार्वजनिक भावनाओं में हेरफेर करने के लिए अफवाहों और प्रचार का उपयोग एक ऐतिहासिक वास्तविकता है, जैसा कि भारत के इतिहास की विभिन्न घटनाओं में देखा गया है। 10. दीर्घकालिक परिणाम। उपन्यास बताता है कि सांप्रदायिक संघर्षों के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं जो सामाजिक ताने बाने पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक बने रहते हैं। धार्मिक संघर्ष के समय लगे घाव आसानी से नहीं भरते। ऐतिहासिक संदर्भ तमस में चित्रित दीर्घकालिक परिणाम ऐतिहासिक वास्तविकता के साथ संरेखित है कि सांप्रदायिक संघर्ष अक्सर प्रभावित समुदायों पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे उनकी सामूहिक स्मृति और पहचान बनती है। संक्षेप में तमस विभाजन के बाद सांप्रदायिक संघर्ष की एक मार्मिक खोज के रूप में कार्य करता है, जो भारत में सांप्रदायिक तनाव की ऐतिहासिक घटनाओं के साथ समानताएं दर्शाता है। उपन्यास धार्मिक शत्रुता की जटिलताओं, हिंसा से उत्पन्न मानवीय त्रासदी और सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर सांप्रदायिक संघर्षों के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। ऐतिहासिक वास्तविकताओं के साथ कल्पना को जोड़कर तमस उन कारकों के जटिल जाल की सूक्ष्म समझ प्रदान करता है जो विभाजन के बाद भारत में सांप्रदायिक कलह में योगदान करते हैं।